Shall I start, sir? Wait, sir, start. Rajesh sir. Yes, sir. Very good afternoon, all of you. Myself, Professor Amol Rajashirke. I'm here to welcome you all on this innovative online lecture series organized by both of Mumbai University's model colleges, Vijayalakshmi Vishwanath Devi College, Sindhudurga Talere, and University of Mumbai's Vishwabhushan Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Model Degree College, Ambadave, Ratnagiri. We are having a technical assistance from Dombivli Shikshan Prasarak Mandas, KB Pendalkar College. This is the 6th week of this consortium online lecture series. This series is organized for all the students who placed in every nook and corner of Konkan region, specifically in the district of Ratnagiri, Raigad, Sindhudurga, and Palghar. Today, we are blessed with another knowledgeable resource person named as Mr. Sunny Punjabi, sir. Sir, very welcome to you. Thank you so much, sir. Yes, sir is associate with K.M. Patel College of Commerce and Science. Sir also having a 3 years experience of teaching. Today, sir is going to deliver a lecture for B.A.F students for the subject of Financial Accounting 5. Today's topic is underwriting of share and denentures. I hope you all are enjoying this lecture series, and I request you all, please do subscribe our channel and hit that bell icon so you can easily get all the notifications of upcoming lectures. Without wasting too much time, directly we are turning to Sunny sir. Sir, over to you. Please start. Okay, thank you so much, sir. Very good afternoon, students. I am Sunny Punjabi. I has been teaching this subject financial accounting since 3 years, students. And I'm working in Matushri K.M. Patel College, and I generally teach accountancy subject students. So without wasting much time, I directly start with my topic. Today, I'm going to take underwriting of shares and debentures, students. This topic is covered in TYBAF Financial Accounting SEM 5. Okay, students. So we will discuss what is underwriting of shares and debentures, students. Underwriting means agreement. Underwriting means agreement between underwriter and company to underwrite the share. अंडरराइटिंग क्या होता है? एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स. तो किसके बीच में होता है? कंपनी और अंडरराइटिंग क्या होता है? एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स. तो किसके बीच में होता है? कंपनी एंड अंडरराइटर. ठीक है स्टूडेंट्स. कंपनी जब भी आईपीओ इशू करती है, जब भी शेयर इशू करती है स्टूडेंट्स, तो कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारा सब्सक्रिप्शन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा. स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? स्टूडेंट्स देखो, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है ना, तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि 90% जो है कंपनी के शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए. 90% कंपनी के शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए. अगर कंपनी के 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? विद इन फ्यू डेज वो शेयर उनको क्या करने पड़ते हैं? उनको एप्लीकेशन अमाउंट रिफंड करना पड़ता है. अगर कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है, कंपनी इज नॉट एबल टू रिसीव 90% ऑफ द सब्सक्रिप्शन, देन कंपनी हैव टू रीपे द होल अमाउंट और एप्लीकेशन अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स. तो स्टूडेंट्स 90% मिलना बहुत जरूरी है. तो स्टूडेंट्स जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उससे रिलेटेड उसको बहुत खर्चा करना पड़ता है स्टूडेंट्स. जैसे प्रोस्पेक्टस बनाना, शेयर होल्डर को इशू, इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको इशू करना, तो इसमें बहुत सारा खर्चा आ जाता है स्टूडेंट्स. अगर कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो उनको ये क्या करना पड़ेगा? अमाउंट रीपे करना पड़ेगा, अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन अमाउंट. तो स्टूडेंट्स इसके वजह से कंपनी क्या करती है? अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है. अंडरराइटर्स मींस
दे आर जस्ट लाइक एजेंट्स स्टूडेंट्स। ये क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं। अंडरराइटर्स जो है क्या करते हैं? कंपनी के शेयर सेल करवाने में उनकी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। अंडरराइटर्स क्या करते हैं? कंपनी के शेयर सेल करवाने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके बदले में अंडरराइटर्स को क्या दिया जाता है? अंडरराइटिंग कमीशन दिया जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, दे विल चार्ज सम अमाउंट। तो स्टूडेंट्स उनको क्या दिया जाता है? कंपनी गिव अंडरराइटिंग कमीशन टू दी अंडरराइटर्स फॉर देयर सर्विसेज। वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए उनको क्या दिया जाता है? अंडर कमीशन। अंडरराइटर्स क्या करते हैं? कंपनी के शेयर सेल करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स अंडर राइटिंग क्या होता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अंडर राइटिंग इज द एग्रीमेंट बिटवीन अंडरराइटर्स एंड द कंपनी to subscribe the share or to sell the shares on behalf of company, ठीक है। तो अंडरराइटर क्या करता है? कंपनी के शेयर्स सेल करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी देखो ये प्रोसेस होता कैसे है। कंपनी उनको क्या करती है? अंडरराइटर्स को जो है ये अंडरराइटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि आप 10,000 शेयर्स परचेज करोगे। सपोज एक बी पर्सन है, उनको बोलेंगे कि आपको जो है 5,000 शेयर्स जो है क्या करना है? सेल करवाना है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है? जो भी अंडरराइटर्स होते हैं अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनको क्या करते हैं? शेयर परचेज करने के लिए बोलते हैं कंपनी के। और सपोज A underwriter है, suppose A underwriter is there and he has taken the guarantee to sell 5,000 shares। अगर इसने गारंटी लिया है कि मैं 5,000 शेयर सेल करवा के दूंगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स वो 5,000 शेयर सेल नहीं करवा पाता है तो उसको वो नंबर ऑफ शेयर परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रिस्क इन्वॉल्व रहता है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? तो ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहेगा। अगर वो 5,000 शेयर सेल नहीं करवा पाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 5,000 शेयर खुद से सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस इन डेप्थ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। तो अंडरराइटिंग क्या होता है? एग्रीमेंट होता है बिटवीन द अंडरराइटर एंड द कंपनी, ओके स्टूडेंट्स। तो रीड कर लेते हैं। अंडरराइटिंग इज एन एग्रीमेंट whereby the underwriter ensure the company that in case of shares and debentures offered to the public are not subscribed by the public to the extent the balance of shares and debentures will be taken up by the underwriters, ठीक है। कंपनी ने अंडरराइटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है टू सेल दी शेयर्स। इफ these shares are not subscribed by the shareholder, then these shares will be taken care of by the underwriters. If shares are not subscribed by the public, then these shares then these shares will be taken care of by the underwriter. Okay, students. Underwriting commission, the consideration payable to the underwriter for underwriting the issue of shares or debentures of a company is called as underwriting commission, students. Actually, they are delivering services to the company. So, students, in return, they want some consideration. The consideration which we give to underwriter for providing these services is called underwriting commission. Okay, students. Next, what are the advantages of the underwriting, student? First is the company is sure of getting the value of shares issued. First advantage is the company is sure getting the value of shares issued, ठीक है। तो कंपनी को जो है श्योरिटी हो जाता है कि 90% जो है हमारे शेयर सब्सक्राइब होने ही वाले हैं स्टूडेंट्स। क्यों 90% शेयर सब्सक्राइब होने वाले हैं? बिकॉज they have they given the responsibility to the shareholders to sell the share। तो अगर underwriters share sale नहीं करवा पाते हैं, if they are not able to sell the specific number of shares, then these shares will be taken care of by the underwriters। तो वो underwriters को ही purchase करने पड़ेंगे। Okay students, next
इट इनहेंसेस द गुडविल ऑफ द कंपनी, ये क्या करता है, कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करता है। इट फैसिलिटेट्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज, the company gets expert advice from the underwriters in the matter of marketing securities. It fulfill the requirement of minimum subscription. ठीक है स्टूडेंट्स, मेन ऑब्जेक्टिव कि हमें 90% का जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो हमें हमें मतलब कंपनी को पूरा का पूरा अमाउंट क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में आती है और अंडरराइटर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ अंडरराइटिंग। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ अंडरराइटिंग। इट रिलीव्स द कंपनी फ्रॉम द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केटिंग द सिक्योरिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अंडरराइटर्स हैव एन इंटीमेट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ द कैपिटल मार्केट। अभी देखो स्टूडेंट्स, अंडरराइटर्स प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। अंडरराइटर्स मतलब ज्यादा करके कौन होता है, लाइक बैंक्स, ओके स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये क्या करते हैं, अंडरराइटर्स का काम करते हैं। अंडरराइटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकता है, या कंपनी भी हो सकती है स्टूडेंट्स। आर एस मन में तो वो क्या करते हैं, उनको पता रहता है कि ये कंपनी के जो है ये कंपनी के साथ हमें एग्रीमेंट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये कंपनी के शेयर हम लोग नहीं सेल करवा पाएंगे, पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी, तो अंडरराइटर्स क्या करते हैं, उस एग्रीमेंट में नहीं आते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या होगा, वो एग्रीमेंट में आएंगे स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, बट अगर वो सपोज सेल नहीं करवा पाते हैं तो सब शेयर्स उनको परचेस करने पड़ेंगे। तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो हेडेक हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि सिर्फ 500 कमीशन अर्न करने के लिए या 5000 कमीशन अर्न करने के लिए वो 1 लाख रुपीज के उनके शेयर्स परचेस करने पड़ रहे हैं। तो इसको जो है रिमूव करने के लिए क्या करते हैं अंडरराइटर्स, क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कंपनी कैसा है, उसके शेयर्स हम लोग सेल करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, इफ दे आर एबल टू सेल दी शेयर्स देन दे विल कम एंड एंटर इनटू द एग्रीमेंट। ओके, अगर वो ऐसा लग रहा है उनको कि ये कंपनी के शेयर सेल नहीं होंगे तो वो फिर एग्रीमेंट में नहीं आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस the types of underwriting. What are the different types of underwriting? One is complete underwriting. What is complete underwriting, students? Listen carefully. If the company gives entire responsibility to the underwriters to sell the share, if the company has given entire responsibility to the underwriters to sell the share, then this underwriting will be treated as and will call it as whole underwriting, sorry, complete underwriting. We'll call it as complete underwriting. If company gives entire responsibility to sell the shares to the underwriters, then this underwriting will be treated as complete underwriting or whole underwriting. Okay students, everyone understood? अगर पूरे के पूरे शेयर सेल करवाने की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने अंडरराइटर्स को दे दी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट अंडरराइटिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट अंडरराइटिंग। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस partial underwriting. Students, what is partial underwriting? If students company do not give entire responsibility to the underwriters, only partial responsibility they have given to underwriter. If company has given the partial responsibility to the subscribe the shares or to sell the shares, then this underwriting will be treated as partial underwriting. Okay students, अगर कुछ नंबर ऑफ शेयर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर और 50%, 60%, 70% का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अंडरराइटर्स को दिया है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, उस अंडरराइटिंग को हम लोग बोलेंगे पार्शियल अंडरराइटिंग। मतलब अगर 60% उन्होंने अंडरराइटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया,
मतलब 40% कंपनी क्या करेगी, खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर 50% अंडरराइटर्स को दिए तो 50% वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पार्शियल अंडरराइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss the next type of underwriting, that is firm underwriting students. Okay students, firm underwriting. In firm underwriting, the underwriters, in firm underwriting, the underwriters agree to purchase specific number of shares irrespective of subscription. अगर अंडरराइटर्स ऐसा कह रहे हैं कि हम लोग स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर परचेस करेंगे irrespective of the shares ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब और फुली सब्सक्राइब, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्म अंडरराइटिंग। मतलब अंडरराइटर्स क्या बोल रहे हैं कि 5000 शेयर जो है हम लोग परचेस ही करने वाले हैं, वेदर क्या होगा, सब्सक्रिप्शन फुली सब्सक्राइब हो, अंडर सब्सक्राइब हो या ओवर सब्सक्राइब हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्म अंडरराइटिंग। इफ अंडरराइटर इज एग्री टू टेक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर irrespective of the subscription, whether over, under or full, this underwriting is called as firm underwriting. Okay students, so we discussed complete underwriting, partial underwriting, firm underwriting. Okay students, now we will now move on to next. Okay students, now we will discuss underwriting commission. I already discussed with you what is underwriting commission. The consideration which is payable to the underwriter for giving their services is called the underwriting commission. Now we will discuss कितना जो है उनको underwriting commission मिलेगा, कितना percentage मिलेगा students. As per Companies Act, अंडरराइटर्स को जो शेयर के ऊपर कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 5%। अंडरराइटिंग को शेयर के ऊपर जो कमीशन मिलेगा मैक्स टू मैक्स वो कितना मिलने वाला है, 5%। ओके स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम कमीशन गिवन टू अंडरराइटर्स फॉर सेलिंग द शेयर टू द पब्लिक इज मैक्सिमम 5%। कितना मिलने वाला है, 5% मिलने वाला है। इफ they are coming into the contract of underwriting of debentures, so students in this case they will give maximum commission of 2.5%। उससे ऊपर उनको नहीं मिलेगा स्टूडेंट। शेयर्स की केस में अंडरराइटर्स को मैक्सिमम कमीशन मिलने वाला है 5%, और डिबेंचर्स की केस में उनको मैक्सिमम कमीशन कितना मिलने वाला है डियर स्टूडेंट्स, 5%। As per Companies Act, I am talking about Companies Act. Okay student, सेबी गाइडलाइन मिलता है वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग ही पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम कंपनीज एक्ट में कितना मेंशन किया गया है, कमीशन ऑन शेयर 5%। ओके स्टूडेंट्स, और कमीशन ऑन डिबेंचर्स 2.5%। कितना मिलने वाला है मैक्सिमम कमीशन, 2.5%। Okay students, next students, now we will discuss marked application और unmarked application. Students, फिर से मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अंडरराइटिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है between the company and underwriter to subscribe the shares if the shares are not subscribed by the public. Okay students, underwriting is the contract between the underwriter and company to subscribe the shares if the shares are not subscribed by the public. Okay students, तो अभी वो अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को क्या करेंगे, वो शेयर सेल करने शेयर परचेस करने के लिए बोलेंगे कंपनी को, कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स
पता कैसे चलेगा कि ये अंडरराइटर के थ्रू शेयर्स आए हैं? तो उसके ऊपर इसका कुछ मार्क होना चाहिए। तो अभी कंपनी क्या करेगी, वो उसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो अंडरराइटर्स को दे देगी। अंडरराइटर्स क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म पे अपना स्टैम्प कर देंगे। अंडरराइटर्स उस एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टैम्प कर देंगे। ठीक है, जैसे कंपनी के पास जब भी पब्लिक जाएगी शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी, तो कंपनी को पता होना चाहिए कि ये शेयर्स ये अंडरराइटर्स के आए हैं। तो उस शेयर एप्लीकेशन के ऊपर वो स्टैम्प करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कंपनी को पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स किसके थ्रू आए हैं, ए अंडरराइटर के थ्रू आए हैं। दीज स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स आर रिलेटिंग टू बी अंडरराइटर। तो ऐसे करके कंपनी को पता लगेगा कि ये कौन से अंडरराइटर से जो है शेयर्स आए हैं। ठीक है, तो अभी मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस द एप्लीकेशन विच बेयरिंग द स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर, द एप्लीकेशन which bearing the stamp of underwriter is called marked application। जिस एप्लीकेशन पे अंडरराइटर्स का स्टैम्प होता है, जैसे कंपनी आइडेंटिफाई कर पाए कि ए अंडरराइटर्स के शेयर्स आए हैं, बी अंडरराइटर्स के थ्रू शेयर्स आए हैं, सी अंडरराइटर्स के थ्रू शेयर्स आए हैं। देखो स्टूडेंट्स, कंपनी जब ये आईपीओ इशू करती है तो स्टूडेंट्स एक अंडरराइटर जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, बहुत सारे अंडरराइटर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। क्लियर हुआ, एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो है सब शेयर सब्सक्राइब करेगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ अंडरराइटर्स कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, और गारंटी लेते हैं वी विल सेल दी स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर। अगर ये हम लोग सेल नहीं करवा पाते हैं तो देन वी विल परचेज दी शेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। अभी हर एक जो है अपना काम करना स्टार्ट करेगा कि आप ये कंपनी के शेयर परचेज कर लो। ठीक है, और उसको वो एप्लीकेशन दे देगा। तो अभी बहुत सारे अंडरराइटर्स रहेंगे और सब जो है अप्लाई करेंगे, जो भी पब्लिक रहेगी वो अप्लाई करेगी शेयर्स के लिए। तो पता कैसे चलेगा कि ये ए अंडरराइटर के थ्रू आए हैं, बी अंडरराइटर, ये क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कंपनी क्या बोलती है अंडरराइटर्स को कि आप स्टैम्प कर दो एप्लीकेशन के ऊपर। तो जब भी एप्लीकेशन रिसीव होंगी तो हमें पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन आपके नाम से आई है, ये एप्लीकेशन आपके नाम से आई है, बी के नाम से आई है, सी के नाम से आई है या डी के नाम से आई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया, द एप्लीकेशन which bearing the stamp of underwriter is called marked application। ठीक है, जिस एप्लीकेशन पे अंडरराइटर का मार्क रहेगा, जिस एप्लीकेशन पे अंडरराइटर का मार्क रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन विच बेयरिंग द स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर इज कॉल्ड मार्क्ड एप्लीकेशन। अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है, अभी स्टूडेंट ध्यान से, कंपनी ने पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर्स को दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को अगर शेयर्स परचेज करने हैं तो अंडरराइटर्स के थ्रू ही परचेज करने, ऐसा नहीं है। पब्लिक क्या कर सकती है, डायरेक्टली भी कंपनी को अप्लाई कर सकती है शेयर के लिए। पब्लिक क्या कर सकती है, सम नंबर ऑफ शेयर्स, और पब्लिक क्या कर सकती है, स्टूडेंट्स डायरेक्टली अगर कंपनी से अप्लाई करती है पब्लिक शेयर के लिए, तो उन शेयर्स के ऊपर किसी का भी मार्क नहीं रहेगा अंडरराइटर्स का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। जिस एप्लीकेशन में किसका भी मार्क नहीं है, कौन से भी अंडरराइटर का मार्क नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन which do not bearing any stamp of underwriter is called unmarked application, is called unmarked application students. Students, I repeat again, underwriting is contract between underwriters and company to subscribe specific number of shares. Okay students, if the shares are not subscribed by the public, after that we discuss the types of underwriting.
Next, we discussed the types of underwriting, students. Full underwriting. Full underwriting means entire share responsibility is taken care of by the underwriter. Then this underwriting is called as full underwriting. And after that, we discussed the partial underwriting. If some shares, if some shares are taken care of by the underwriter, if some share, if some shares are taken care of by the underwriters and entire responsibility is not given to the underwriters, then this underwriting is called the partial underwriting. Okay, students. And after that, we discussed the firm underwriting. If specific number of shares, if specific number of shares are guaranteed taken by the underwriters, this underwriting is called firm underwriting. This underwriting is called firm underwriting. Full underwriting means पूरे के पूरे शेयर जो है वो क्या करने वाले हैं, अंडरराइटर्स को जो है देने वाले हैं सेल करने के लिए. तो फुल अंडरराइटिंग कुछ नंबर ऑफ शेयर, कुछ परसेंटेज 40%, 60%, 70% वो अंडरराइटर्स को गारंटी अंडरराइटर्स को दे रहे हैं सेल करने के लिए. पार्शियल अंडरराइटिंग. फर्म अंडरराइटिंग, अगर अंडरराइटर एग्री हो रहा है स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स वो परचेज करेगा खुद के लिए, irrespective of subscription, fully subscribed, over subscribed, under subscribed, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्म अंडरराइटिंग. उसके बाद हमने कमीशन देखा. कमीशन क्या था? द मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन इज पेड ऑन शेयर is 5%. Maximum commission is paid on debentures 2.5% as per Companies Act. As per Companies Act. As per Companies Act. Okay, students. उसके बाद हमने डिस्कस किया मार्क्ड एप्लीकेशन और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया अनमार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? The application which bearing the stamp of underwriter is called marked application. The application which do not bearing any stamp of underwriter is called unmarked application. मैंने बोला था ना कि underwriters शेयर सेल करवा के देंगे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, वो बोलेंगे परचेज करने के लिए. तो कंपनी को कैसे पता लगेगा कि ये अंडरराइटर के थ्रू आए हैं? तो अंडरराइटर क्या करेगा, जो भी एप्लीकेशन उसको मिलेगी कहाँ से, कंपनी से, उसके ऊपर वो क्या कर देगा, अपना स्टैम्प मार देगा. ठीक है. तो फिर कंपनी को जब ये एप्लीकेशन रिसीव होगी तो उनको पता चलेगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द जर्नल एंट्रीज. ओके स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. Students, listen carefully. In case of gold shares or debentures are not taken up by the public, the remaining is allotted to underwriter the entries. मतलब underwriters ने 5000 शेयर्स का गारंटी लिया था कि मैं शेयर सेल करवा के दूंगा, बट वो 3000 शेयर ही सेल करवा पाया. तो जो 2000 शेयर सेल नहीं करवा पाया, ठीक है, तो वो अभी उसको परचेज करने पड़ेंगे. तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, दैट वी आर डिस्कसिंग. इफ अंडरराइटर इज कमिंग इनटू द एग्रीमेंट टू सेल 5000 नंबर ऑफ शेयर्स and public is only subscribed 3000 shares, then the remaining number of shares, that is 2000 shares, that will be taken care of. That shares will have to be purchased by the underwriter. Okay students, तो उसका एंट्री क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. Underwriters account debit to equity share capital account to debentures account. First we will discuss only shares, then we will discuss about the debentures, students. So first we will discuss about the shares. If underwriter coming into the agreement to sell the share, students, so underwriters account debit to equity share capital account or to preference share capital account. Okay students,
अभी यहाँ पे हमने अंडरराइटर्स को डेबिट क्यों किया? व्हाई वी डेबिट द अंडरराइटर्स? मैंने आपको क्या बोला कि 5000 शेयर्स का उसने गारंटी लिया है, he will sell definitely 5000 shares, but public only subscribe 3000 shares. Now 2000 shares का left, तो ये शेयर किसको परचेस करने पड़ेंगे? they have to be purchased by the underwriter. ओके, तो अंडरराइटर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे. व्हाई वी विल डेबिट द अंडरराइटर अकाउंट? बिकॉज स्टूडेंट, कंपनी will कंपनी विल क्रिएट डेटर. सॉरी स्टूडेंट, कंपनी इसको क्या एज्यूम करेगी कि अभी हमें अंडरराइटर से पैसे मिलने वाले हैं, वी विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द अंडरराइटर्स, बिकॉज अंडरराइटर्स को शेयर परचेस करने पड़ेंगे, तो कंपनी को उससे अमाउंट मिलने वाला है, तो अंडरराइटर अकाउंट को वो डेबिट करेंगे. क्यों? उनको डेटर बनाएगी कंपनी. कंपनी अंडरराइटर को क्या बनाएगी? डेटर बनाएगी, क्योंकि अंडरराइटर 5000 शेयर सेल करने वाला था, सिर्फ 3000 शेयर ही सेल किया. ठीक है, तो 2000 शेयर अभी इसको परचेस करने पड़ेंगे, तो कंपनी अपनी बुक्स में उसको डेटर बनाएगी. ठीक है, इन सम फ्यूचर डेट वी विल रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम द अंडरराइटर, तो कंपनी उसको डेटर बनाएगी. तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो हम लोग क्या करते हैं? शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग अवर लायबिलिटी. because we are increasing our liability. Students, as you know, the liabilities rule is, अगर आपको liability को increase करना है, you want to increase the liability, then you have to credit the liability account. If you want to decrease the liability, then you have to debit the liability account. Okay, student. And in case of assets, if you want to increase the asset, then debit the asset. If you want to decrease the asset, then credit the asset. So students, listen carefully. Underwriter is going to purchase, okay students, unsubscribed shares. So entry will be underwriter account debit, debtor account debit. Okay students, company will create a debtor. Okay student, underwriter को वो debtor मानेगी. तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, डेटर को क्रिएट करना है, मतलब एसेट को क्रिएट करना है, देन वी हैव टू डेबिट द डेटर अकाउंट, डेटर मीन अंडरराइटर. टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी इशूइंग द शेयर. ओके स्टूडेंट्स, सो कंपनीज लायबिलिटी विल इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग द शेयर कैपिटल अकाउंट. तो क्या एंट्री बनेगा? अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इफ अंडरराइटर्स अगर वो शेयर के एग्रीमेंट में नहीं आया है, डिबेंचर्स इशू करने के एग्रीमेंट में आया है, इन दिस केस वी विल पास द जर्नल एंट्री एज अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. एक ही एंट्री होगा स्टूडेंट, या तो शेयर का होगा और डिबेंचर्स का होगा स्टूडेंट्स. तो हमने पहला एंट्री क्या देखा? इफ underwriter coming into the agreement of shares, then we will pass the journal entry as underwriter's account debit to share capital account. If underwriter coming into the agreement to sell the debentures, then students, in this case we will pass the journal entry as underwriter's account debit to debentures account. Okay students, हमने अंडरराइटर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने उसको डेटर बना दिया स्टूडेंट्स. और शेयर इशू कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल को, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट करेंगे डिबेंचर्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, underwriter has provided these services. Okay student, for that service we will give the commission. We means company. We are preparing the books of company students, not underwriter. We are preparing the books of company. Okay students. So next is underwriting commission due. Okay students, now we will have to pay the underwriters the amount, okay, for their services rendered. Okay students, so
underwriting commission account debit. So students, why we will debitate the underwriting commission account? Because students, company, we are preparing the books of company, and again telling you, students, we are preparing the books of company, students. So underwriting commission account debit, this is expense of the company. So that's why company debited the underwriting commission account. As per nominal rule, we will debit the sorry, when there will be expenses, then we will debit the account. Nominal account का rule क्या है? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So there is expenses, okay, students, of company. So underwriting commission account we will have to debit, okay, students. तो underwriters account, underwriters को credit क्यों किया? Because हमने underwriter को यहाँ पे क्या बना दिया? Creditor बना दिया. कंपनी को कमीशन देना है किसको? अंडरराइटर को. कंपनी को कमीशन पे करना है किसको? अंडरराइटर को. तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट. व्हाई अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट? बिकॉज दिस इज अवर एक्सपेंसेस. अवर मींस कंपनीज एक्सपेंसेस टू अंडरराइटर्स अकाउंट. हमने अंडरराइटर को क्या बना दिया? हमने मतलब कंपनी ने क्रेडिटर, क्योंकि हमें उसको पे करना है ना, अंडरराइटर को पे करना है, तो हमने उसको क्या बना दिया? क्रेडिटर. तो क्रेडिटर को अगर क्रिएट करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया? उसको क्रेडिट किया. तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ we move on to next entry, third entry, for payment of commission. First we only due the commission, now we are going to pay the commission to the underwriter. So students, entry will be underwriter account debit. Underwriter is the receiver of cash. Underwriter is receiving the commission. इसको commission मिल रहा है. Therefore, we are debiting the underwriter's account. Underwriter is the receiver. So underwriter account debit. Okay, students, and cash or bank is going out of the business. Is going out of the business. So we will credit the bank account. Student. Underwriter's account debit. Okay, students, to bank account. Okay, students, payment of commission. Sometimes company give instead of cash. Sometimes company give shares instead of cash. So in this case, we will pass the journal entry as underwriter's account debit to share capital account. मतलब कंपनी ने क्या किया? उनको अमाउंट पे नहीं किया, उनके कंसिडरेशन के लिए उनको शेयर्स इशू किए. तो क्या एंट्री पास करेंगे? In that case, we will debit the underwriter account and credit the share capital account, students. In some cases, instead of cash, they give debentures to the underwriters. So in that case, we will pass the journal entry as underwriters account debit to debentures account. Okay, students, कंपनी ने अंडरराइटर के सर्विसेज के लिए उसको कैश पे नहीं किया, उसकी जगह पे डिबेंचर्स इशू किए. सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी हम लोग शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो क्रेडिट करते हैं, बिकॉज कंपनी लायबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज. तो उसको हमने क्रेडिट किया. स्टूडेंट्स, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. ओके, नेक्स्ट, फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अंडरराइटर्स रिसीव. अभी स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्या केस डिस्कस किया कि अंडरराइटर्स को 5000 शेयर के कॉन्ट्रैक्ट में आए थे कि हम लोग 5000 शेयर सेल करवा के देंगे, बट वो 3000 शेयर ही सेल करवा पाए, तो 2000 शेयर कभी उनको खुद से परचेस करने पड़ेंगे. ठीक है, तो मैंने बोला कि क्या एंट्री पास करेंगे? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट. अंडरराइटर्स को डेटर बनाया गया क्योंकि अभी उनसे अमाउंट मिलने वाला है. ओके, और शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया. और डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में है तो डिबेंचर्स को हमने क्रेडिट किया. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा? कमीशन ड्यू. अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है कंपनी का, और अंडरराइटर को क्रेडिटर बना दिया क्योंकि उनको देना है. वी आर गोइंग टू पे कमीशन टू द अंडरराइटर. ओके, सो दैट्स व्हाई वी क्रेडिटेड द अंडरराइटर अकाउंट. स्टूडेंट्स,
After that, we discussed for payment of commission. Okay, students, we can make the payment of commission in three ways. Either we can give cash or bank, or we can give share capital, or we can issue the shares, or we can issue the debentures students. Okay students, तो हमने वो एंट्री देखा, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट. अभी देखो अंडरराइटर्स को अमाउंट पे कैसे किया जाता है, या अंडरराइट, देखो स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट है फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अंडरराइटर्स रिसीव. अभी अंडरराइटर्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर परचेज करने 2000. ओके स्टूडेंट्स, सपोज शेयर का प्राइस मैं मान लेता हूँ 10 रुपीज, तो 2000 इंटू 10 20,000, मतलब कंपनी को 20,000 रिसीव होने वाले हैं किससे, अंडरराइटर से. कंपनी इज गोइंग टू रिसीव 20,000 फ्रॉम द अंडरराइटर. कंपनी इज गोइंग टू रिसीव 20,000 फ्रॉम द अंडरराइटर, and the company is going to pay 5,000 to the underwriter for their services or commission, or in other words we can say commission. तो कंपनी को 20,000 मिलने वाला है अंडरराइटर से क्योंकि वो शेयर्स सेल नहीं करवा पाया, और कंपनी को 5,000 पे करना है कमीशन किसको, अंडरराइटर को. तो कंपनी क्या करेगी, ऐसा नहीं करेगी कि बोलेगी कि आप 20,000 पहले मुझे दो, तो 5,000 हम लोग आपको कमीशन पे करेंगे, ऐसा नहीं होगा. नेट अमाउंट जो है अंडरराइटर से क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा और अंडरराइटर को पे किया जाएगा. मतलब कंपनी को रिसीव होने वाले हैं अंडरराइटर से 20,000 और कंपनी को कमीशन पे करना है अंडरराइटर को 5,000. तो कंपनी क्या करेगी, अंडरराइटर को बोलेगी आप 15,000 रुपीज मुझे दे दो. कितना अमाउंट पे कर दो मुझे, प्लीज गिव मी 15,000 रुपीज. क्यों, क्योंकि 20,000 अंडरराइटर से मिलने वाले थे अमाउंट और 5,000 कमीशन पे करना था उनको. ओके स्टूडेंट्स, देन नेट अमाउंट विल बी 15,000. तो 15,000 कंपनी उससे रिसीव करेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या एंट्री बनाएंगे इन दैट केस, बैंक अकाउंट डेबिट, because company is getting the cash from the underwriter, so we will debit the bank account debit. Okay, who is giver, underwriter is giver. Underwriter is giving the amount to the company for the shares, so we will credit the giver. Giver is underwriter to creditors. So students, entry we will pass बैंक अकाउंट डेबिट to underwriters account. बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे बिकॉज कंपनी के पास पैसा आ रहा है, हम लोग कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. और अंडरराइटर्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर गिवर ऑफ कैश. ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट. ओके, नेक्स्ट. Students, now we will discuss the format, how to determine the liability of underwriter. How to determine the liability of underwriter. अभी कंपनी भी क्या करेगी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी और उसमें वो क्या करेगी, it will try to find out how many number of shares, okay, how many number of shares liability is coming into underwriter's account. ओके स्टूडेंट्स, कंपनी भी डिटरमाइन करेगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स का लायबिलिटी शेयर्स के ऊपर अंडरराइटर के ऊपर आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनो. ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी अभी हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ग्रॉस लायबिलिटी, अभी ग्रॉस लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स का अंडरराइटर ने गारंटी लिया है, द नंबर ऑफ शेयर्स whose guarantee taken by underwriters, मतलब अंडरराइटर ने बोला है कि 5,000 शेयर, ठीक है, मैं सेल करवा के दूंगा, आई विल डेफिनेटली सेल आउट 5,000 शेयर.
ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रॉस लायबिलिटी कितना हो जाएगा अंडरराइटर का 5000, ग्रॉस लायबिलिटी कितना हो जाएगा 5000. ही इज कमिंग इनटू द एग्रीमेंट टू सेल 5000 नंबर ऑफ शेयर. वो क्या करने वाला है 5000 शेयर जो है सेल करवाने वाला है. तो ग्रॉस लायबिलिटी क्या हो जाएगा 5000. स्टूडेंट्स, अभी वो 5000 शेयर्स का गारंटी ले रहा है, आई विल डेफिनेटली सेल आउट 5000 शेयर. अभी वो क्या करेगा एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कलीग्स को, ठीक है, कि प्लीज परचेज द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी. ओके, तो सब लोग एप्लीकेशन ले लेंगे. अभी शेयर होल्डर कभी बनेंगे जब भी वो एप्लीकेशन अमाउंट पे करेंगे. तो अभी वो क्या कर रहा है एप्लीकेशन उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ठीक है, उसने एप्लीकेशन जो है क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अभी इसमें से क्या हो रहा है कंपनी को 2000 शेयर और उसके ऊपर वो स्टैम्प कर रहा है एप्लीकेशन के ऊपर. जैसे कंपनी को पता चले कि ये इसके तरफ से आई है एप्लीकेशन, तो कंपनी को जो है 2000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है, इन द नेम ऑफ अंडरराइटर, इन द नेम ऑफ अंडरराइटर. ग्रॉस लायबिलिटी मतलब जितने का गारंटी लिया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर ही विल गोइंग टू सेल, तो ये क्या हो जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी. ओके स्टूडेंट, मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब उसने एप्लीकेशन तो दे दिया, ओके, एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया उसने, बट कंपनी को सिर्फ 2000 एप्लीकेशन रिसीव हुई इन द नेम ऑफ अंडरराइटर. ओके, तो बैलेंस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, बैलेंस विल बी 3000 शेयर्स. ये किसको परचेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अंडरराइटर्स को. ये किसको परचेस करना पड़ेगा, दैट अंडरराइटर 3000 शेयर उसको परचेस करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, अभी ध्यान से सुनो स्टूडेंट, अंडरराइटर्स का लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए, जैसे उनके ऊपर ज्यादा लायबिलिटी नहीं आए, ज्यादा जो है उनके ऊपर शेयर्स नहीं आए, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है पूरा का पूरा गारंटी अंडरराइटर्स को दे देती है, तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर्स को दे देती है. यू सेल दी शेयर. ओके स्टूडेंट्स, बट वो क्या करती है खुद भी रिसीव करती है एप्लीकेशन. मतलब क्या होता है डायरेक्टली भी कोई शेयर होल्डर कंपनी में अप्लाई कर सकता है शेयर के लिए. तो वो क्या करती है कंपनी, वो जो शेयर डायरेक्टली उनके पास आते हैं उन्होंने तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर्स को दे दिया, बट जो कंपनी के पास डायरेक्टली शेयर्स आ गए वो क्या करती है अंडरराइटर्स को दे देती है उनका लायबिलिटी रिड्यूस करने में, क्योंकि वो शेयर्स तो कंपनी के काम के नहीं है. आ रहा है समझ में, जो डायरेक्टली कंपनी के पास शेयर है कंपनी ने पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर्स को दे दिया, ठीक है. तो अगर कंपनी के पास जो शेयर है वो यूज करती है तो रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, तो रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, तो वो हम लोग क्या करते हैं इसमें से लेस करते हैं. Why we subtract these application? Because these application will reduce the liability of underwriter. These application will reduce the liability of underwriter. अभी सपोज कंपनी के पास 2000 शेयर आ गए, कंपनी के पास डायरेक्टली मतलब अंडरराइटर्स के नेम के नहीं, विदाउट नेम वाले मतलब अंडरराइटर्स के थ्रू नहीं, डायरेक्टली कंपनी को 2000 एप्लीकेशन रिसीव, तो वो क्या करेगी ये अंडरराइटर को दे देगी कि आप ले लो और अपना लायबिलिटी रिड्यूस करो, क्योंकि हमारे काम का तो नहीं, हमने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 2000 शेयर्स. So now the underwriter have to purchase or compulsory purchase 1000 शेयर. कंपनी के पास जो डायरेक्ट एप्लीकेशन आई थी वो भी उन्होंने क्या कर दिया अंडरराइटर को दे दिया. अभी कम अंडरराइटर को सिर्फ परचेज करना है. अंडरराइटर नाउ द अंडरराइटर हैव टू परचेज ओनली 1000 शेयर. ओके स्टूडेंट्स, अभी ये उसको परचेज करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है. तो जो डायरेक्टली शेयर कंपनी को रिसीव हुए वो क्या होता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन. सबको लॉजिक क्लियर हो गया रहेगा.
कि हम लोगों ने लेस क्यों किया। 5,000 का गारंटी लिया था उसने नंबर ऑफ शेयर सेल करवाने का, 2,000 इसके नाम से एप्लीकेशन आई, तो उसका लायबिलिटी 3,000 हो जाएगा। अभी उसको 3,000 खरीदना ही था, बट कंपनी को कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशन भी आई है, तो कंपनी क्या करेगी, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी उनके काम की नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव गिवन टू अंडरराइटर। तो कंपनी ये जो डायरेक्ट एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है, वो क्या कर देगी, अंडरराइटर को दे देगी। ठीक है, तो अंडरराइटर का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग 3,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 2,000 फ्रॉम 3,000, सो नाउ वी लेफ्ट अप विद दी ओनली 1,000 शेयर। मतलब अभी अंडरराइटर को सिर्फ कितनी नंबर ऑफ शेयर परचेज करने हैं, 1,000 शेयर। ओके स्टूडेंट्स, सो वी डिस्कस दी फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस। आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट अनमार्क्ड एप्लीकेशन एंड 1,000 विल बिकम अवर नेट लायबिलिटी। यहाँ पे 1,000 हमारा क्या आ गया, नेट लायबिलिटी आ गया। ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, बैलेंस लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, उसके बाद हमें जो जो भी नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, वॉट एवर शेयर्स वी आर गेटिंग, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट लायबिलिटी। वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट लायबिलिटी। Students, we discussed one sum on underwriting of shares and debentures. After that, we wind up the session. Problem number 6, we are going to discuss, students. Albert Limited issued 50 lakh equity share. Albert Limited means Albert is company. Albert Limited is a company, issued 50 lakh equity share. They are going to issue 50 lakh equity share of rupees 10 each. Face value is 10 rupees. The whole issue was underwritten by A, B, and C as below. Okay, students, means the guarantee is taken by, or the responsibility is taken by the underwriters as follows. A has come into the agreement with the company to sell 15 lakh shares, and B is coming into the agreement to sell 25 lakh equity shares, and C is coming up with the agreement to sell 10 lakh equity shares. 10 lakh equity shares. Okay, students. So total will be 15 lakhs, 25 lakhs, 10 lakhs. So students, we can say that this is the case of full underwriting. Okay, students. The company means Albert Limited is given entire responsibility to the underwriters to sell these number of shares. Okay, students. A has taken the guarantee to sell 15 lakh shares, and B has taken the B has coming into the agreement to sell the 25 lakh shares, and C coming into the agreement to sell 10 lakh shares, students. Okay. Now we will see how many number of applications are going to receive by the company in the name of underwriters. So students, application were received 48 lakh 50,000 short applications received. Okay, short applications, how many applications, 1 lakh 50,000 students, because company is going to issue 50 lakh shares, and कंपनी आप कंपनी को अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में आने के बाद भी कितने शेयर्स रिसीव हुए, 48 लाख 50,000 शेयर। अभी ये किसको परचेस करने हैं वो हमें देखना है, ठीक है।
So students, applications were received for 48 lakh 50,000 shares. This the marked applications were as follows. Means A के नाम से कंपनी को कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई है? 12 लाख शेयर. बी के नेम से कितनी एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई है? 25 लाख शेयर. और सी के नाम से कंपनी को कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई है? 8,50,000 शेयर. ओके स्टूडेंट्स, calculate the number of shares to be taken up by the underwriters, and unmarked applications are to be distributed among the underwriters in the ratio of gross liability. So students, we start the sum. Okay students, format is particulars, basis, underwriters name. Here the underwriters names are A, B and C. All three are coming into the agreement. A, B and C. Okay students, we already discussed the format. First we will write gross liability. After that we will subtract marked application. After that we will get balance. Okay students, gross liability means कितने number of shares का उन्होंने guarantee लिया है, they will sell these shares. So students, they have taken the guarantee to sell 15 lakh shares. A ने कितना guarantee लिया है? मैं 15 lakh shares sell करूंगा. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 lakhs. Next, 25 lakhs. C, 10 lakh shares. Gross liability means the number of shares is taken care of by the underwriters if the shares are not subscribed by the public students. So gross liability is of 15 lakh shares. A का 15 लाख होगा, B का 25 लाख होगा, C का 10 लाख होगा. Students, now we will subtract the marked application. Here the marked applications are in the name of A, B and C are given as 12 lakh shares. In the name of A, we have received the application 12 lakh shares. Students, we are preparing the books of company. Okay, students, we are preparing the books of company. So in the name of A, we received the application 12 lakh shares. Okay, students. तो A में से हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 12 lakhs. In the name of B, how many applications we receive? In the name of B, we receive 25 lakh shares. In the name of C, how many applications we receive? I think it is 8 lakh 50,000 shares.
So students, we will subtract these applications. So students, the balance will be 3 lakh shares, 0, nil, and this will be 1,50,000 shares. So students, ए ने बोला था कि मैं 15 लाख शेयर सेल करवाऊंगा, बट उसने कितना करवाया 12 लाख, तो उसका अभी लायबिलिटी कितना आ गया 3 लाख का। बी ने 25 लाख बोला था, 25 लाख सेल करवा दिया तो 0 हो जाएगा, और सी ने 10 लाख बोला था स्टूडेंट्स और 8 लाख 50 करवा दिया सेल, तो 1 लाख 50 आ गया। अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया है, अंडरराइटर्स को। तो अभी कंपनी को जो डायरेक्टली शेयर्स मिलेंगे वो अंडरराइटर्स में डिवाइड कर देगी, क्योंकि उसके काम के तो है नहीं, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, तो अंडरराइटर्स का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, विल रिड्यूस, ओके, फ्रॉम दी शेयर। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अंडरराइट लेस करेंगे व्हाट, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होती है, जो डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलती है किसको, अंडरराइटर्स को, सॉरी कंपनी को। लेस unmarked application. Students, now tell me how we will divide the unmarked application, students. If we divide equally, then there will be uh, uh, then there will be conflict arise. क्यों? अभी ए ने 15 लाख का गारंटी लिया है, 25 लाख का लिया है, 10 लाख का लिया है, ठीक है। तो अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स का उन्होंने गारंटी लिया है, तो अगर इक्वली बांट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें कैसे उनको जो है इसका बेनिफिट देना चाहिए, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, इन नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव टेकन द गारंटी। हमें इसको कैसे देना चाहिए उनको बेनिफिट, इन द नंबर ऑफ शेयर दे हैव टेकन द गारंटी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल determine the unmarked application. Students, total applications received by the company 48 lakh 50,000. Okay students, and in the name of A 12 lakh shares, B 25 lakh shares, C 8 lakh 50,000 shares. First we will determine the unmarked applications. How many number of applications received in the name of company, students? So I will write over here calculation of unmarked applications. Students, the formula for calculation of unmarked application is total application received by the company. From that we will subtract marked applications. Students, listen carefully. Total applications received by the company 48 lakh 50,000. So students, in place of total application, I will write 48 lakh 50,000 students. Total application received by the company 48 lakh 50,000. And students, in the name of the applications received in the name of underwriters are 12 lakh, 25 lakh, 8 lakh 50,000. We will total these all applications. 12 plus 25, 37, 37 plus 8, 45 lakh 50,000. So the application received in the name of A, B, and C total 45 lakh 50,000. $45 lakh 50,000 students. Students,
out of 48,50,000, the applications received in the name of underwriters are 45,50,000. Then balance applications will be received in the name of company itself. Okay, students. So we left up with the 3 lakh application जो किसी के नाम की नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी? अनमार्क्ड एप्लीकेशन. We will give the credit or benefit of these unmarked applications to the underwriters in the ratio of gross liability, students. Gross liability ratio is 15 lakh, 25 lakh, 10 lakhs. The ratio will be 15, 25, 10. Now we will apply 5 table. So final ratio is 2:5:2. Here 3 आ जाएगा यहाँ पे 3:5:2. We will divide these 3 lakh shares in the ratio of 3:5:2. Total will be 10, means 3/10 into 3 lakh. So 90,000. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो बी का जो है लायबिलिटी 0 हो चुका है, मतलब इसको नीड नहीं है स्टूडेंट्स शेयर्स का, तो हम लोग इसको नहीं देंगे, इन दोनों को दे देंगे क्योंकि इनका लायबिलिटी अभी 3 लाख है और इनका 1,50,000 है. सो वी विल गिव दीज 2 अंडरराइटर्स ए एंड सी. सो स्टूडेंट्स वी विल डिवाइड 3 लाख इनटू 2 अंडरराइटर्स. अगर बी में आता था तो उसको भी देते थे, बट अभी जरूरत नहीं है तो हम लोग ए और सी को दे देंगे स्टूडेंट्स. So we will divide in 3:2 students. Instead of 3:5:2, we will divide in 3:2. क्योंकि नीड किसको है? ए एंड सी को है. तो कितना आ जाएगा? 3 लाख इंटू 3/5. 3 लाख इंटू 3/5 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? थ्री लाख into 3 divided by 5, 1,80,000. Students, we will give 1,80,000 to A underwriter and remaining applications will be given to C underwriter. Remaining application will be 1,20,000. Now students, we can determine the final liability of underwriters. Okay students. So final liability of underwriters. 1 second students. So students, final liability of underwriters, we call it as net liability. Everyone agreed? Okay student, then final liability will be $1,20,000. These many number of shares have to purchase by the A, have to purchase A, and 30,000 number of shares have to purchase C. Okay students. So student, this is final liability and liability of B is 0. Okay students, this is all about the underwriting of shares and debentures. Sir, thank you, sir. We will start here, sir.